हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की बात करें, और जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, इस वर्ड को डिफाइन किया गया है 2D में, of the act. If you see the definition part of 2D, let us go into 2D. जस्ट रीडिंग करनी है एक बार पूरी, ताकि आपको याद रहे। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, कोई बड़ी डेफिनेशन नहीं है। सिंपल, दे आर टेलिंग what amounts to arbitral tribunal. Simple. They are saying arbitral tribunal means sole arbitrator or panels of arbitrators. Simple. This is arbitral tribunal means sole arbitrator or panel of arbitrators. What does it mean? It means that it is very much clear because it is arbitral proceeding. It is amicable dispute, resolve dispute resolution process. So it should not be concerned with lots of technicalities. And that is why I simply saying, even a single person, when doing the arbitration, है ना, he will be considered arbitral tribunal. But when we are using the word arbitral tribunal, we are not talking about some specific designed institute. So some specific design institute is there. Who is doing the arbitration? वही arbitration tribunal कहलाएगी? नहीं. Arbitration tribunal can be any person. That is, even a single person appointed by parties for out of court settlement. सिंगल इंडिविजुअल भी अगर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए अपॉइंट किया गया, उसको आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बोला जाएगा. This is a simple definition of section 2D. If you see, chapter number third, chapter 4, and chapter 5, and they all talks about arbitral. This is all about arbitral tribunal. If I say section 10 to approximately section 27 is all about arbitral tribunals. ये सब arbitral tribunal की बात. Out of this, if we talk about chapter number 3, it talks about composition of arbitral tribunal. Talks about composition of arbitral tribunal, 10 to 15, section number. If we talk about chapter number 4, it talks about jurisdiction of arbitral tribunal. It is about the jurisdiction of arbitral tribunal. That is between section 16 to 7. Chapter number 4, 16 and 17 talk about jurisdictional perspective, how the arbitral tribunal holds the jurisdiction, and how to conduct the proceeding. Talk about chapter number 5, conduct of arbitral tribunal. What is the conduct of arbitral tribunal? उसके लिए section 18 से 27. This is a core study of today's class. You will try to understand the composition, है ना, jurisdiction, and the conduct of arbitral tribunal. थोड़ा सही रखेंगे, फास्ट रखेंगे, बट कंसेप्ट को क्लियर रख लीजिए. ठीक है.
Chapter composition. One thing is clear, if we talk about arbitral tribunal, so 2D is making clear. It can be sole or panel. Sole means single individual. But when it's about panel, how the panel is decided और what is the strength of the panel, है ना? इसी का जवाब देता है हमको सेक्शन 10. Section 10 is a declaration. What is the declaration? That parties are free to decide the numbers of the arbitrator. Parties are free to decide I'm not audible also. How many people I'm not audible? To how many people I'm not audible? Sanket also. एक्चुअली जहां मैं हूँ वहाँ बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू है. मैंने इसी वजह से अपना बंद किया हुआ है वॉल्यूम. बट शायद ऑडिबिलिटी में भी प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज ऑफ नेट फ्लक्चुएशन. नॉट क्लियर वॉइस. अभी क्लियर है? वॉइस ब्रेकिंग. चलिए ट्राई करते हैं कि ना ब्रेक हो, है ना. अगर ब्रेक होती है तो फिर कुछ ना कुछ देखते हैं सोल्यूशन. चलिए, what I'm making you understand that if I talk about chapter 3 talk about composition of arbitral tribunal. When I talk about the composition of arbitral tribunal, section 2D simply states that arbitral tribunal means the sole arbitrator or the panel of the arbitrator. When I say panel of the arbitrator, it means not clear. Again problem. Again issue. Again voice breaking. Just hold on, देखते हैं, एक मिनट रुकिएगा. So when I'm saying arbitral tribunal, I say arbitral tribunal as per 2D means sole arbitrator or a panel of arbitrators. When I talk sole arbitrator, it means individual. We are not focusing upon this. But when we talk about panel, so what is the strength of the panel? Who will decide the number of arbitrators? How the number of arbitrators will decide? For that, we have to go into chapter number 3. Under chapter number 3, section 10 is a declaratory provision. Simple declaration बोलता है क्या? Parties have free will to decide the number of arbitrators. That means when we talk about panel, the quorum of the panel or the strength of the panel is not fixed. It is the parties themselves are free to decide. Strength of arbitral tribunal. So what is going to be the strength of the arbitral tribunal? You can't decide करेगा. Parties themselves will decide the strength of the arbitral tribunal. But what is the embargo created by section 10? That when you are deciding the strength of the arbitral tribunal, the total strength shall not in a even. The only check on or only embargo is that
the strength of tribunal shall not be exceeding, or I say shall not be uneven, exceeding value is equal. That means whenever a tribunal should be created, it should be created in the odd number. ट्रिब्यूनल हमेशा ऑड नंबर्स में क्रिएट होगी. ऑड नंबर बोले तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 and so on. But you cannot have tribunal under 2, 4, 6, 8, 10 in this number. Or if the parties are not fixing the number of the arbitrator, याद रखिए, if parties have failed to fix the number of arbitrators, then the sole arbitrator will be considered as a arbitral tribunal. The sole arbiter will become the arbitral tribunal. Let us go into section 10. एक बार रीडिंग कर लेते हैं ना, छोटा सा है, रीड करते हैं क्लियर. This says the parties are free to determine the number of the arbitrator, provided that such number shall be not be in an even number. Failing to determination referred in subsection 1, the arbitral tribunal shall consist of sole arbitrator. Very clear. कोई प्रॉब्लम नहीं है सेक्शन 10 में. इट्स अ डिक्लेरेटरी प्रोविजन. सब इजी से है ना, 15 तक तो इजी इजी है, एक सिंगल रीडिंग है. अब सपोज parties have decided the number of arbitral tribunals है ना. अब we try to understand how to appoint the arbiter. तो what is arbitral tribunal, ये तो क्लियर हो गया. हाँ. अब how to decide the number of the arbitrators, or I can say appointment of the arbiter. First of all, if I talk about process of appointment, section 11 is the answer to this question. हाँ. Appointments कैसे होंगे, section 11 talk about. But before getting into the section 11, let us understand what section 11 is saying. First thing that section 11 says, any person, no specific qualification is needed. ठीक है. Any person of any nationality can be appointed as arbiter. तो किसी भी नेशनैलिटी का कोई भी इंडिविजुअल आर्बिट्रेटर की तरह अपॉइंट हो सकता है, बट ऑब्वियस बाय द पार्टीज, by parties will decide who will be appointed. Second, parties are free to decide the mode or manner of. Parties are free to decide the manner of appointment. When I say parties are free to decide the manner of appointment, इसका मतलब क्या है? That is, they are free. Parties will decide. And the strength of arbitral tribunal. Second, qualifications of arbitrators. जो भी क्वालिफिकेशंस हैं, वो क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी, है ना. थर्ड, even if we can say भी nationality भी लिख सकते हैं, nationality of arbitrators. Nationality of arbitrator भी लिख सकते हैं. Parties are there to decide. If suppose
सब पढ़ेंगे हम, मतलब रीडिंग है ये, सबको पता ही है। इफ पार्टीज फेल टू डिसाइड द पार्टीज फेल्स टू डिसाइड द arbitral tribunal, that means they decide to fail how many numbers should be there, या मैनर ऑफ आर्बिट्रेशन को डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। Arbitral tribunal will be arbitral tribunal consist of three arbitrators, ठीक है, three arbitrators से consist होगी। each party will appoint one arbitrator। तो हर पार्टी एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगी, और the two appointed arbitrators will appoint a third arbitrator। सबको पता है। This third arbitrator is known as presiding, so he will become the presiding। ये थर्ड आर्बिट्रेटर होगा, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलेंगे। ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कैसे करना हो आप पढ़ेंगे सब। 30 days, that means each party shall appoint their respective arbitrators within 30 days। हर किसी आर्बिट्रेटर को अपना आर्बिट्रेटर 30 दिन के अंदर अपॉइंट करना होगा, और आफ्टर दैट द टू आर्बिट्रेटर shall appoint presiding officer within 30 days। है ना? तो पहले पार्टीज अपॉइंट करेंगी 30 दिन के अंदर, और पार्टी के बाद जो रिमेनिंग इंडिविजुअल्स हैं, जो पैनल हमने अपॉइंट किया है, वो अपने पर्सपेक्टिव पे थर्ड आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेगा 30 दिन। ठीक है। 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्प्यूट, 30 days जब से, है ना, आर्बिट्रेशन क्लेम किए, जिस दिन से आर्बिट्रेशन क्लेम हुआ है उस दिन से, तो यस, इट कैन बी डेट ऑफ डिस्प्यूट ऑल्सो, और अदरवाइज डेट ऑफ डिस्प्यूट भी हो सकती है, और अदरवाइज कुछ और भी हो सकता है। तो जिस दिन से आर्बिट्रेशन क्लेम हो गया, कई बार आर्बिट्रेशन डब्ल्यूएस में आकर क्लेम होता है ना, तो डिस्प्यूट पहले राइज होता है, तो कुछ भी हो सकता है। और अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज क्लियर है, तो ऑब्वियसली फिर कोर्ट नहीं जाएंगे, और सीधा ही प्रोसेस डे ऑफ डिस्प्यूट से ये प्रोसेस फॉलो होगा। ठीक है। सपोज party fails to follow this process, fails to follow the process, अगर इस प्रोसेस को फेल हो गई फॉलो करने से, देन व्हाट, देन हाई कोर्ट ने क्या किया है, लिख लीजिएगा, मेरा नेट कुछ हो रहा है चलेगा। ठीक है। हाई कोर्ट ने क्या किया है, हाई कोर्ट हैज एस्टैब्लिश आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस, ईच हाई कोर्ट हैज एस्टैब्लिश इट्स ओन आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। ठीक है। दी आर्बिट्रेटर
will be appointed by arbitral institutions. तो अगर पार्टी फेल कर जाती है 30 दिन के बाद, तो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन अपॉइंट कर देगी. दे विल अपॉइंट द आर्बिट्रेटर्स. With this mindset, let us read into section 11 and find out ये क्या क्या है. सेक्शन 11 में थोड़ा बहुत इंटरनेशनल वाला वो पार्ट है, वो मैंने टच नहीं किया, बट सेक्शन 11 पूरा पढ़ते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. रीडिंग की प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस वहां से आते हैं, है ना. तो लेट अस अंडरस्टैंड. A person of any nationality may be an arbitrator unless otherwise agreed by the parties. So we knows this. The party can appoint any person of any nationality as an arbitrator. So everybody is free to be an arbitrator. Nobody can be stopped to be an arbitrator. This is dependent. Parties are okay with it. Parties okay. और आपको इसको ऐसे याद रखना है 11 1 सारे सब सेक्शंस पे आते हैं. And that is one. Person of any nationality can be appointed as arbitrator. Simple. 11 subsection 2. Parties subject to subsection 6. आएंगे subsection 6 के, तो अभी फोकस नहीं करेंगे. Parties are free to agree on the procedure for the appointment of arbitrator. ये भी हमने पढ़ लिया, right? Parties are free to fix the procedure of arbitrator. Third, failing any agreement referred in subsection 2. In an arbitration with 3 arbitrators, each party shall appoint 1 arbitrator, and the 2 appointment arbitrators shall be appointed by 3rd arbitrator, who shall act as the presiding officer. ये भी हमने पढ़ लिया कि जहां पे आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल्स क्लियर है, 3 लोग अपॉइंट होने हैं, और वहां पर अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा है, तो फिर कौन कैसे अपॉइंट होगा. ईच पार्टी विल अपॉइंट विद दी 1 member and all together will appoint the presiding officer. बट जहां पे उन्होंने पहले ही प्रोसेस फिक्स कर लिया है, तो फिर ये प्रोसेस की जरूरत नहीं. अभी समझेंगे उसको, एक बार रीड कर लेते. The Supreme Court and the High Court shall have a power to designate arbitral institution from time to time and have been created by the Council under Section 43 1I for the purpose of this act, provided that in respect of those High Court's judicials where no graded arbitral institutions are available, then the Chief Justice of the concerned High Court may maintain a panel of the arbitrator for discharging the functions and duties of the arbitral institutions, and any reference to the arbitrator shall be deemed to be an arbitral institution for the purpose of this section, and the arbitrator appointed by the party shall be entitled to such fee as at the rate as specified in the 4th schedule, provided further that Chief Justice of the concerned High Court may from time to time review the panel of the arbitrator. Simple section 3 क्या बोल रहा है कि if parties are failing to appoint the arbitrator, it is the High Court who will appoint the arbitrator. High Court have 2 manner of the appointment of arbitrator. First, either they have already fixed or either they have already created the designated institutes, special institutes, that is known as arbitral institutes. तो 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. हाई कोर्ट ने या तो अपने आर्बिट्रल इंस्टीट्यूट्स अपॉइंट किए हुए, स्टैब्लिश किए हुए, तो कोर्ट क्या करेगी, वेयर पार्टीज आर फेलिंग टू अपॉइंट द आर्बिट्रेटर, कोर्ट विल आस्क द कंसर्न डेजिग्नेटेड आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन. नहीं, आई एम नॉट एबल टू राइट इट ऑन स्क्रीन. ट्राई कर रहा हूँ, बट जब दिखेगा तो वो डेजिग्नेटेड जो इंस्टीट्यूट है हाई कोर्ट, उसमें से आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट करेगी और उनकी फीस स्टैब्लिश करेगी.
और ऐसी हाई कोर्ट जहां पे आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन फिक्स नहीं हुआ है, स्टैब्लिश नहीं हुआ, वहां पे कौन होगा? वहां पे हाई कोर्ट आर्बिट्रल पैनल्स स्टैब्लिश करके रखती है, यानी कि हाई कोर्ट के पास लिस्ट ऑफ द आर्बिट्रेटर्स होती है, वो उनमें से किसी को अपॉइंट करती है। वेरी सिंपल। फोर्थ क्लॉज, if the party fails to appoint the arbitrator within 30 days from the receipt of the request to do so from the other party, or the two appointed arbitrator fails to agree on the third arbitrator within 30 days from the date of their appointment, the appointment shall be made on the application of the party by the arbitral institution designated by the Supreme Court in the case of international arbitral institution, and the High Court in the case of arbitral institutions other than the commercial. Simple. तो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन में हाई कोर्ट अपॉइंट करती है, और कमर्शियल इंटरनेशनल हाई आर्बिट्रेशन में सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करती है। कब? जब पार्टीज फेल हो जाती हैं अपने आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट करने से। और कैसे करेगी? 30 दिन का टाइम है पार्टीज को, 30 दिन के अंदर अपने आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने, और द कंसर्न आर्बिट्रेटर हैव टू क्रिएट द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल विद द establishment of third umpire, that is presiding officer. And if they fails, then also High Court or the Supreme Court will interfere as the case may be, on the application of the concerned party. Let us. So this is all we have done. 11 to 11.4. Let us go on to 11.5. What is 11 subsection 5? Failing any agreement referred in subsection in an arbitration with sole arbitrator. If parties fails to agree, the arbitrator within 30 days from receipt of the request of one party from the other party to so agree, the appointment shall be made on an application by party in accordance with the provisions contained in clause 4. Simple. कहते हैं जहां पे सोल आर्बिट्रेटर का केस है, सोल आर्बिट्रेटर, वहां पर भी 30 डेज का टाइम है। इफ पार्टी कंसर्न फेल टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर विद इन 30 डेज, अगर वो 30 डेज में आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर पाए तो कौन करेगा? हाई कोर्ट या सुप्रीम? Will be appointed by High Court or Supreme Court as the case may be under 11 subsection 4. That is on the application. On application. पार्टी एप्लीकेशन देगी उसके बेसिस पे। आर्बिट्रेटर्स के पास जज वाली सारी पावर होती है, आंसर इज आर्बिट्रेटर के पास जज वाली तो सारी पावर नहीं होती है, बट उस जैसी काफी पावर्स होती है विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर आर्बिट्रेशन। हम पढ़ेंगे वो सारी पावर्स के, डोंट वरी। अब तो हम कॉम्पोजिशन पे फोकस कर। नेक्स्ट इज 11 subsection 6, where under the appointment procedure agreed upon by the parties, the party fails to act as requested under the procedure, or the party fails, or two appointed arbitrator fails to reach an agreement expected of them under the procedure, or the person including the institution fails to perform any function entrusted to him under this procedure, the appointment shall be made on the application of a party by the arbitral institution designated by the Supreme Court in case of international arbitration, or the High Court in case of arbitrator other than the international commercial arbitration, as the case may be, to take necessary measures unless the agreement of the appointment procedure provided other means of securing the appointment. What is this? What is this?
11 clause 6 applies cases where procedure of appointment is fixed. अब समझते हैं क्या कहेंगे. Point is fixed. क्या कहना चाह रहा हूँ, समझने की कोशिश करते हैं. अगर आप आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपॉइंटमेंट प्रोसेस को समझेंगे तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपॉइंटमेंट प्रोसेस दो तरीके से हो सकती है. फर्स्ट, दो सिचुएशन हो सकती है. प्रोसीजर इज ऑलरेडी फिक्स्ड बाय द पार्टी, already fixed by parties. Another is procedure not fixed by the parties. अगर सिचुएशन है प्रोसीजर फिक्स्ड बाय द पार्टीज, सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 रीड विद सेक्शन 11 सब सेक्शन 6 देगा. और अगर प्रोसीजर इज नॉट एस्टेब्लिश्ड बाय पार्टी, सेक्शन 11 सब सेक्शन 3 एंड सेक्शन 11 सब सेक्शन 4 रीड विद, आई कैन से रीड विद सेक्शन 3 सब सेक्शन 4 देगा. क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर प्रोसीजर फिक्स्ड बाय द पार्टीज हुआ तो दो बातें. पार्टीज are not bound to appoint tribunal within 30 days. है ना, इनके ऊपर 30 डेज का एम्बार्गो नहीं लगता है. नॉट मैंडेटरी टू अपॉइंट ट्रिब्यूनल्स इन द 30 डेज. दैट इज पार्टी कैन फिक्स as per their time fixed, as per their consents, और ऐसे consensual decisions, उनके अपनी consents. But suppose fails to fix the appointment, fails to appoint tribunal. पार्टीज ने ट्रिब्यूनल सेट किया है, उन्होंने बताया हमको 1 महीना चाहिए, 4 महीने चाहिए, उसमें उन्हें करना था. बट दे फील्स, या तो दो आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं हुए, या दो हो गए, तीसरा आर्बिट्रेटर, एज द केस में. तब सिंपल कंसर्न पार्टी में अप्लाई टू कंसर्न पार्टी में अप्लाई टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, एज द केस में. अगर डोमेस्टिक है तो हाई कोर्ट जाएगा, और इंटरनेशनल है तो सुप्रीम कोर्ट से. इसका कोई टाइम पीरियड या कुछ ऐसा कुछ नहीं. वेयर एज अगर हम इसकी बात करें, प्रोसीजर नॉट फिक्स बाय द पार्टीज, तो यहाँ क्या कर, 30 डेज का टाइम है टू अपॉइंट टू अपॉइंट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. और अगर फेल होता है अगेन, तो एप्लीकेशन कहाँ रहेगी, बाकी सब प्रोसेस सही है, टाइम का डिफरेंस है. एप्लीकेशन विल गो टू हाई कोर्ट, और एप्लीकेशन कहाँ रहेगी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट. एज द केस में, अगर डोमेस्टिक है तो हाई कोर्ट, और इंटरनेशनल है तो सुप्रीम. इज दिस क्लियर और नॉट? क्लियर है, बताइएगा प्लीज. क्लियर, आगे रीड करें फिर से. Let us read 6b. The designation of any person or institution by Supreme Court, or as the case may be, High Court, for the purpose of section
shall not be regarded as delegated of judicial power by the Supreme Court. Right? What is this? क्या बोल रहे हैं? सिंपल सी, बट इट्स अगेन नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, बट मैं आपको समझाता हूँ क्या कहता है ये। कहता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या स्टैब्लिश करेंगे? आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करेंगे। ये अभी बात हुई हमारी, है ना? यहीं से आर्बिट्रल, अभी आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करती है। अब हर एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट जाएगी, सुप्रीम कोर्ट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन को भेजेगा, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन अपॉइंटमेंट करेगा। बहुत लंबा प्रोसेस है। तो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्रोसेस और हाई कोर्ट ने क्या प्रोसेस फॉलो किया है कि पार्टी सीधी एप्लीकेशन किसको भेजती है? आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। और आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन सीधा डायरेक्शन अपॉइंटमेंट करता है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? कोर्ट ने अपना टाइम बचाने के लिए अपने आप को डायमेंशन से निकाल दिया, है ना? अब प्रोसेस सिंपल है कि अगर आपका आर्बिट्रेशन नहीं हुआ, आप यहाँ जाओ और ये अपॉइंटमेंट, ये विल डू दैट बिकॉज द आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस। तो आर्बिट्रल एप्लीकेशंस जब आती है तो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस डायरेक्टली अपॉइंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इनके पास कोई जुडिशियल पावर है। डू नॉट कंसिडर द, कंसिडर द जुडिशियल पावर, है ना? उनको अपना टास्क डेलीगेट किया है। इट इज दे हैव अ डेलीगेटेड टास्क, दे परफॉर्म delegated task, but it does not mean that they hold any judicial powers. They do not hold any judicial powers, right? So they have clarified under Section 6B so that no chaotic situation may arise regarding their power. It's simple. The court has delegated you to perform a particular task, duty, that is upon the appointment application, you decide the appointment. But suppose appointment application become disputed, it has been challenged. You cannot decide on the status of application. Now you have to forward the application to High Court, and High Court will perform the judicial function. आपका function सिर्फ है कि if you get an arbitral appointment application that we are failing to appoint the arbitrator, you can go with the appointment. But you are not having any power to decide the status of the arbitral clauses or arbitral agreement. ठीक है? This is the manner of arbitration. अब याद रखिए, जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट 8 11 8, द आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड, उसकी ऑब्लिगेशन, और that I can say that arbitral institution before appointing arbitrator, they shall get sure, होल्ड रखिएगा ये फोन प्लीज। चलिए, तो arbitral institution before appointing the arbitrator shall get sure for what thing? First, that the arbitrator, I can say concerned arbitrator is not biased. ये पहली ड्यूटी है, वही चेक करेगा कि बायस नहीं। सेकंड, he hold the concerned qualification, he hold concerned qualifications। तो ऐसा नहीं है कि किसी हैप्पीजर्ड मैनर में या बिजायर मैनर में यू विल अपॉइंट दी arbitrator, you will make sure कि if he is going with some commercial transaction, this person must be acquainted with commercial transactions, है ना? फिर वो उसके पास होगा। what I'm making you concerned qualification, that means the subject of arbitration
is an area of expertise or area of knowledge of that arbitrator. ठीक है, तो दिस इज ऑल. अब एक बार रीड कर लेते हैं. कुछ और क्लॉजेज हैं, वो सिंपल से क्लॉजेज है, इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट उसे रीड करना है. The arbitral institution referred in subsection 4, 5, and 6 before appointing the arbitrator shall seek a disclosure in writing from the prospective arbitrator in term of subsection 4 of section 12 and having due regard and have to due regard first any qualification required for the arbitrator by agreement of the parties. Second, the content of the disclosure and other constitution as are likely to secure the appointment of an independent and impartial arbitrator. है ना, तो दो बातों का ध्यान रखिएगा कि उसकी कंसर्न क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और वो अनबायस्ड होनी चाहिए. आगे क्या बोल रहे हैं? इन द केस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ सोल और द थर्ड आर्बिट्रेटर इन एन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, ये हमारे पर्पस का नहीं है, बट पढ़ लेते हैं. The arbitral institution designated by the Supreme Court may appoint the arbitrator of any nationality other than the nationalities of parties where the parties belonging to the nation. Simple, unbiased के लिए कि मान लो एक इंडिया और सिंगापुर की फाइट होगी, है ना, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, तो आप कोशिश करो कि जो थर्ड आप आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल अपॉइंट कर रहे हो वहां उसमें पीपल ऑफ इंडिया और सिंगापुर ना हो, है ना, ताकि वो बायस ना हो पर्टिकुलर टुवर्ड्स एनीथिंग. सिंपल, उसको डिक्लेयर किया. 11, where more than one request have been made under subsection 4 or subsection 5 or subsection 6 to different arbitral institution, the arbitral institution to which the request has been first made under the relevant subsection shall be competent to appoint. Very simple, है ना. तो पार्टीज ने एक से ज्यादा आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस को एप्लीकेशन दी, तो जिसके बाद पहले आई थी डिसाइड करेगा, उसके बाद जुडिशियल डिसाइड करेगा. वेरी सिंपल, और बाकी कुछ नहीं. 13 इज इंपॉर्टेंट, एक बार रीड करना चाहता हूँ. 11 सब सेक्शन 13, तो स्टार बना दीजिए कि क्या है. बोलते हैं एन एप्लीकेशन. एप्लीकेशन कौन से सेक्शन में आती है? एप्लीकेशन कम अंडर सेक्शन 3, वो सेक्शन 11 सब सेक्शन 3A. बोलते हैं एन एप्लीकेशन मेड अंडर दिस सेक्शन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रेटर्स shall be disposed by the arbitral institution within the period of 30 days. मार्क कर लीजिए, 30 दिन का टाइम होता है. ठीक है, तो बेसिकली प्रोसेस क्या होता है कि एक पार्टी कंसर्न आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन को एप्लीकेशन देगी, द आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन दूसरी पार्टी को नोटिस सर्व करेगा और 30 दिन के अंदर आर्बिट्रेशन अपॉइंट. ठीक है, एप्लीकेशन कहाँ आती है? 11 सेक्शन 11 सब सेक्शन 3 कैपिटल ए. इज दिस क्लियर और नॉट? किसी कोई सवाल पूछेगा सेक्शन 11 से? क्लियर है? चलिए सेक्शन 12, वेरी इंपॉर्टेंट. सेक्शन 12 बेसिकली क्या है, लिखा तो इसके ऊपर हेडिंग है ग्राउंड्स ऑफ चैलेंज. हाँ, व्हेन आई से ग्राउंड्स ऑफ चैलेंज, तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड्स ऑफ चैलेंज ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर. ग्राउंड्स ऑफ चैलेंज द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर. बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बेसिकली सेक्शन 12 गिव यू द, इट इज द इंस्ट्रक्शंस, और आई कैन से इट्स द ड्यूटीज ऑफ आर्बिट्रेटर्स, है ना. आर्बिट्रेटर की ड्यूटी है, द आर्बिट्रेटर हु इज गेटिंग अपॉइंटेड, ही हैव सर्टेन ड्यूटीज टुवर्ड्स द पार्टी. क्या? That at the time of appointment he have certain obligations to be fulfilled, है ना. Before appointment, arbitrator should review first, यानी कि he have to give
undertaking. This is an undertaking given by the arbitrator. है ना? Whether he have any relation with the party, he have any relation with parties, है ना? So basically, he should not have any relationship with parties. Second, that he is not an interested person in subject matter. इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स जो भी सब्जेक्ट मैटर है जिस पे arbitration होने वाला है उसका उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो बायस नहीं है उसके लिए. एंड थर्ड, दैट he will give his 100% to arbitration. That means वो मेरी तरह बिजी बंदा नहीं है, समझ रहे हो? He is free person. He is 100% giving 100% time to the arbitral proceedings. तो जिसके लिए पॉइंट किया गया उसके लिए उसके पास फ्री है ना? एटलीस्ट फॉर 12, याद रखना, एटलीस्ट फॉर 12. ये जो बॉन्ड साइन होता है उसमें लिखता है कि 12 महीने तक तुम्हें फ्री हो. 12 महीने का बहुत बड़ा टाइम होता है फॉर द arbitration. अभी हम पढ़ेंगे भी. ठीक है. अगर ये सर्कमस्टेंसेस आर्बिट्रेटर नहीं बताता, फेल्स टू रिवील ऑल दिस, तो उसने बॉन्ड नहीं दिया है और उसका रिवील हो गया कि ही हैव सर्टेन कनेक्शन विद सर्टेन, है ना? ये ग्राउंड ऑफ चैलेंज. इस बेसिस पे उसका अपॉइंटमेंट चैलेंज हो जाएगा. दैट मींस ही इज अ अनबायस्ड पर्सन. ही इज नॉट अनबायस्ड पर्सन, ही इज अ बायस्ड पर्सन. So that is this is these are justifiable ground for his credibility and our truthfulness. ठीक है. इस बेसिस पे that he is impartial और his qualification is not good. ठीक है, वो पॉइंट हो जाएगा. ठीक है. बेसिकली मैं बताता हूँ आपको, अभी हम पढ़ेंगे. सेक्शन 12 में ये भी डिक्लेरेशन दी है कि अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर शैल नॉट बी चैलेंज. ठीक है. बट कंडीशंस इंपोज की. ये कंडीशन है कि अगर ये ग्राउंड आपने प्रूव कर दी तो इट कैन बी ऑलवेज बी चैलेंज. तो आप नॉर्मली चैलेंज नहीं कर सकते, नहीं नहीं मैं हैप्पी नहीं हूँ आर्बिट्रेटर से. आप प्रूफ करिए कि आर्बिट्रेटर इंस्टीट्यूशन गलत हुआ है, आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल गलत अपॉइंट हुआ. अगर आपने प्रूफ कर दिया, यू कैन चैलेंज इट. ठीक है. चलिए, लेट अस रीड विद दिस माइंडसेट. लेट अस रीड सेक्शन. इस माइंडसेट से सेक्शन 12 पढ़ते हैं और कुछ शेड्यूल नंबर 6. शेड्यूल नंबर 6 बात करता है लिस्ट ऑफ द पीपल हु कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज आर्बिट्रेटर. वो कौन कौन से लोग हैं जो आर्बिट्रेटर की तरह अपॉइंट नहीं हो सकते, वो भी दे दो. चलिए पहले सेक्शन को. व्हेन अ पर्सन इज अप्रोच्ड इन कनेक्शन with his possible appointment as arbitrator, he shall disclose in writing any circumstances which, as the existence is a direct, indirect, of any past, present, relationship with, or interest in any of the parties, or in relation to a subject matter in dispute, whether financial, business, professional, or other kind, which is likely to give rise to a justifiable doubt as to his independence or impartiality, and which are likely to affect the availability to devote sufficient time to the arbitrator, and in particular the ability to complete the entire arbitration within 12 months.
है ना। तो आर्बिट्रेशन कंप्लीट करने का टाइम होता है 12 महीने। तो उसी के लिए कह रहे हैं कि आप ये अंडरटेकिंग दोगे कि आपका सब्जेक्ट मैटर से, पार्टी से ऐसा कोई भी कनेक्शन नहीं है जिससे आप बायस्ड हो और आप अवेलेबल हो। एक्सप्लेनेशन नंबर 1, द ग्राउंड स्टेटेड इन फिफ्थ शेड्यूल शैल गाइड in determining whether circumstances exist which give rise to a justifiable doubt on the independence or impartiality of the arbitrator. That is, कहते हैं शेड्यूल 5 में हमने ग्राउंड्स थे। लेट अस अंडरस्टैंड शेड्यूल 5। ये शेड्यूल 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी करना है, यहाँ से एमसीक्यू आता है इसलिए मैं खुलवा रहा हूँ, है ना। एक क्वेश्चन में बनता है ये, जहाँ पे आपको आंसर पूरा लिखना है। द फॉलोइंग ग्राउंड गिव अ राइज टू अ जस्टिस, सबको मिल गया ना, सबको मिला। पीछे है शेड्यूल 5, पीछे सबसे पीछे मिला। Arbitrator relationship with parties or counsel. The arbitrator is an employee, consultant, advisor, or has any other past or present business relationship with the party. ये connection. The arbitrator currently represent or advise one of the parties or affiliate one of the parties. ये भी connection. Arbitrator currently represent the lawyer or law firm acting as counsel for one of the parties. The arbitrator is a lawyer in the same law which is representing one of the parties. The arbitrator is a manager, director, etc. हाँ, ये पूरी लिस्ट दे रखी है, आपको ये लिस्ट याद रखनी है 15 तक, राइट। तो मार्क करके रखिएगा, आर्टिकल शेड्यूल 5 सेक्शन 12 का एक्सप्लेनेशन नंबर 1। सेम वे द डिस्क्लोजर शैल बी मेड बाय सच a person in the specified form। पूरा एप्लीकेशन का फॉर्मेट दे रखा है शेड्यूल 6 में, है ना। लिखा हुआ है माय नेम, कॉन्टैक्ट, प्रायर एक्सपीरियंसेस, अभी ऑलरेडी कितने आर्बिट्रेटर चल रहे हैं, ठीक है। फिर सेक्शन शेड्यूल के फैक्टर्स जो दे रखे हैं ना, उसकी लिस्ट बनी है और उस पर टिक करना होता है, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, सिंपल फॉर्मेट है, ठीक है। तो वो प्रोफार्मा फिल करना होता है। तो दिस इज ऑल। बाकी 2 3 4 वो सिंपल सी बात एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि एप्लीकेशन कैसे जाएगी, क्या होगा, वो सब चीजें। इज इट क्लियर होना, ठीक है। तो ग्राउंड्स, वी विल डू सेक्शन 13 टुमारो, ग्राउंड्स ऑफ चैलेंज ऑफ आर्बिट्रेशन। मैं आपका क्रैश कोर्स नहीं कर पा रहा हूँ अभी, शायद वो भी नहीं कर भी नहीं पाऊंगा, और मैं किसी और को देने के मूड में नहीं हूँ। ऐसा नहीं है, 2 3 लोगों ने बेचारों ने दे हैव गिवन अ कंसर्न कि वो ले लेंगे मेरे बेhalf पे क्रैश कोर्स। बच्चों ने बोला है जो सीनियर है तुम्हारे कि दे विल टेक, बट अभी मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि मैं खुद लूंगा, ठीक है। बस पढ़ो जो शेड्यूल दिया हुआ, डू नॉट गेट पैनिक, ट्राई करो उस शेड्यूल से, जिस शेड्यूल को दिया हुआ, एंड हैव अ फेथ, हो जाएगा।